हेलो हेलो। हेलो। चलो।
Good evening and welcome to match number 85. Chola Veerans versus the Panchala Pride. Chola Veerans probably losing out their top raider Arjun Rati. Just gone in to write that police examination. All the best for him as well. May him really get flying colors and pass out and become a policeman. That is his dream. And Panchala Pride will be with only one substitution line. The last match for this day, the first day of the challenger round, and it is a very, very tough fight versus Aravali Arrows and Periyar Panthers, Humpty Heroes and Colony Tuskers. And that is what the points table also suggests us. Colony Tuskers going right on top with the points they carry forward into this challenger round and also winning the previous match as well. So that makes it the top contenders for the Colony Tuskers being there. But Panchala Pride and also now Chola Veerans will be clashing on against each other. 6th and 7th place team. So who will go above one another? We will see that when Harshit calls in both the teams on the mat. तो चैलेंजर राउंड है तैयार। चैलेंजर कौन किसे बेहतर दे पाएगा ये जानेंगे आप सभी के साथ इस बड़े मुकाबले में। आज के दिन का ये अंतिम मुकाबला है, बट कहना होगा इस धमाकेदार मुकाबले में नजरें होगी सभी की इन दोनों टीमों पर। तो सबसे पहले बुलाने जा रहे हैं आप सभी के मध्य पांचाला प्राइड। और पेनल्टी क्या पंचाला प्राइड चोला को दे पाएगी? बुलाते हैं चोला वीरन्स। Samata said, and Chola Veerans have come down on the mat. Panchala Pride will be taking this advantage of having 2 points to the carry forward from the booster round into the challenger round, as Vikas Kumar and Rohit Rati will be there in the corners, and Ravi Saket and the top second best raider of the winter edition, Parminder Bura, the captain, will be there alongside with Rahul Kumar to make sure Panchala Pride get a lot of raid points. Prince Kumar and Amish Rati. This covers has to fire. They will fire. And only Ashutosh Kumar, as I mentioned, on the substitution lines, and Mandeep Katkar, the coach of Panchala Pride. And Harshit, Chola Veerans, all the best to Arjun Rati for writing the police examination. But without him, can they manage the Panchala Pride challenge? जी बिल्कुल, ये एक टफ चैलेंज यहाँ पर रहेगा इस टीम के लिए। किस तरह से यहाँ पर ये यहाँ प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। तमिल बनन आज आपको फिर से नजर आएंगे। एम गौतम इस खिलाड़ी पर सबसे ज्यादा दारोमदार होगा। वंजीनाथन, एम दिनेश कुमार, ये सबसे बड़ा उभरता हुआ सितारा नजर आया है चोला वीरन्स के लिए। डी रंजीत को आज काफी समय के बाद मौका मिल रहा है। नवीन, इस खिलाड़ी पर निगाहें बनाई रखनी होगी। राइट कॉर्नर पर प्रवीण कुमार होंगे, लेफ्ट कॉर्नर पर गौरव दहिया होंगे। इनियनन, मोहनदास और डीजे सूर्या यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट में नजर आएंगे। नवीन, एक टफ प्रश्न रहेगा, जरूरी टफ चैलेंज जरूर रहेगा चोला वीरन्स के लिए यहाँ पर। Absolutely. And Iniyavan there in the substitution lines. And today, very surprisingly, the Stormy Sudhakar did not get his Super 10 against the Humpty Heroes. It was a tough game for the Palani Tuskers. Anyways, all eyes now on Parminder Bura, the top second best raider, 139 raid points. And can he make it up to 150 today? Will be a big question. As the top defenders also looks nice, as Ashish Sachdev on that occasion got his high five against Palani Tuskers there. जी बिल्कुल, दर बदर मैच पर मैच ये मुकाबला यहाँ पर बदल रहा है और ये समीकरण बदल रहा है। क्या आप गौतम यहाँ पर 7 या 8 पॉइंट के साथ दर्शा सकते हैं
कि आज का दिन अगर कोई बेस्ट डिफेंडर समाप्त करेगा तो वो होंगे, पर जरूर मुश्किल काम रहेगा। परमिंदर बोरा को ज्यादा उन्हें शिकार बनाना होगा। जब सिक्का वहां पर उछला था, पंचाला प्राइड के पक्ष में गिरा था। यहाँ पर आपको अपने राइट हैंड साइड की स्क्रीन पर नजर आएंगे। तो नवीन, संडे इवनिंग इतनी बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर एक बड़ा मुकाबला चल रहा है और खेल जगत में भी एक बड़ा मुकाबला चल रहा है, जहां पर एक और बड़ा सितारा चमक रहा है। जिस तरह से पंचाला प्राइड के लिए ये सितारा चमकेगा। Yeah, I understand the jersey colors almost match, and Parminder Bura 57.43 on that strike rate. He has to make sure he holds fort together for Panchala Pride to do well, because a lot of over dependency also on him will not be good, as the top third best defender now is M. Gautam. GM Gautam 17 मुकाबले, 68 टैकल पॉइंट्स, टैकल स्ट्राइक रेट 55 के आसपास नजर आएगी। पिछले कुछ मैचेस में थोड़ा सा इनका पैचेस में प्रदर्शन रहा है, अन्यथा शुरुआत में तो इन्होंने क्या कहर ढाया था, बता दिया था कि ये खिलाड़ी पूर्णतः से रेडर्स को आसानी के साथ जीने का मौका नहीं देगा। बट पंचाला प्राइड के लिए मनदीप खटकर साहब हमेशा वहां पर व्यस्त रहते हैं उन कॉइन्स के साथ। बट चलिए, आज भी तैयार है और ये चेहरे पर मुस्कुराहट क्या आज के दिन को समाप्त कर पाएगी। मैनेजर ललित कुमावत साहब हमेशा कुछ न कुछ सोच विचार करते रहते हैं, ये जरूरी भी है। Yeah, I think he heard you, Arshit. He heard you. That's why he was just smiling, as Jay Kumar, the coach of Chola Veerans, is all set with his manager. Alongside with him is Pushmita Karat. So Jay Kumar, we saw him. He was watching the Palani Tuskers match with very concentrated eyes. The Palani Tuskers took on the Humpty. It was a tough fight, but Palani Tuskers winning it very technically. And it was a team effort. Once again, as Panchala Pride have won 9 matches out of their 17, and that is why they're carrying in 2 points in this challenger round from the booster round. जी बिल्कुल। और पंचाला प्राइड, यस नवीन, पंचाला प्राइड की अगर आप बात करें तो 5 मुकाबले जो पिछले इन्होंने खेले हैं, 3 मुकाबले हारे हैं, 2 मुकाबले जीते हैं और लॉस के साथ यहाँ पर चैलेंजर राउंड में आ रहे हैं। तो मनोबल इन्हें थोड़ा बेहतर रखना होगा। वहीं क्या कहानी रही है चोला वीरेंस की, 17 मुकाबले, 8 जीत 8 हार। पिछला इनका बूस्टर राउंड 3 हार, फिर लगातार 3 जीत, फिर लगातार 2 हार। They'll have to make sure that is not so even sealed, because they have to do well to manage their name in the summit round as well. Because the competition is getting tougher and tougher, and this winter edition in the Yuva Kabaddi series will be even more tougher than expected. And Gaurav Daya, he has to fire. It's long view now from Gaurav Daya. We haven't seen a high five from him. And coming in from a left corner, if that high five can come in from that number 25 jersey today, that'll be a real boon. So let's go in for that all-important countdown to get this match underway. Chola Veerans will want to make sure they go up against Panchala Pride in a positive manner. First trade will happen from the Chola Veerans. Yeah. And also the reason why Chola Veerans will be not very happy in raiding first is because Tamil Vannan is not that well. And Dinesh Kumar will be starting the raid as well. And Tamil Vannan needs to understand that escape route is so important. As Dinesh gets the first point. There we go. They are up and away. The Chola Veerans. Light defender from left cover. जी प्रिंस कुमार वहां पर थोड़े से अतिरिक्त टैकल के लिए वहां से चले गए थे। सिंगल एंकल होल्ड सा करना चाहते थे, बट किस पोजीशन से आप कर रहे हैं ये वो शायद थोड़ा देखना भूल गए थे। और लेफ्ट कवर की पोजीशन से एंकल होल्ड करने के लिए गए। डबल थाई, सिंगल थाई के साथ शुरुआत करना चाहते थे, बट इस खिलाड़ी को यहां पर समय नहीं लगेगा। वंजी नाथन का एक प्रॉपर डैश नजर आया और नवीन पूरी तरह से चका दिया था यहां पर परविंदर बोरा को इन्होंने। Oh yeah, Vanjinathan there, he understands what it really means to make sure you need to get that dash very correctly, because it was Parminder Bura, the top raider for Panchala Pride. So in the first 2 raids of the match, Panchala Pride already been pushed to corner. Dinesh once again comes in. It's nice to see Dinesh raiding well. And Tamil Vandan needs to understand that he will have to find that escape route with a turn.
He's a very good raider, but when he does not turn, he looks a very simple raider rather than a very effective raider as Ravi Saket comes in. जी बिल्कुल रवि साकेत और नवीन जब वहां पर अभी 1-0 स्कोर था तो मुझे वो फाइनल की भी याद आ गई जो वहां पर अर्जेंटीना और फ्रांस के मध्य चल रहा है, बट अब आपको 3-0 नजर आएंगे, यानी कि चोला वीरन्स यहां पर 3-0 से बढ़त पर हैं और जिस तरह से चोला वीरन्स चमक रहे हैं वहां थोड़े से मैसेज जो आपने शब्द बताया था ना नवीन कि साउथ में वैसे बड़ा पॉपुलर है ब्रदर, उसका मतलब होता है वहां मैसी भी इसी तरह से डोमिनेटिंग प्रदर्शन दर्शा रहे हैं। 1-0 से अर्जेंटीना भी लीड पे है। That's a nice little information that everybody wants to just have a look as and when they're watching this fabulous sport as well, Kabaddi. But I'll tell you something. Sometimes, yeah, I know it's the finals of FIFA, but sometimes I get bored because when you get so engrossed with Kabaddi, watching 90 minutes of football also Yeah. sometimes, True, Naveen, true, very true. sometimes I feel there is not much action happening. And I think, see, it has been accepted worldwide. And Rohit Kati now goes in for the dash. No, does not get it. Right cover comes in. Proper dash once again. Gautam, I think he's decided to go on top of that defender leaderboard. जी बिल्कुल, अब वो पूरी तरह से तैयारी कर आए। देखिए इस बार फिर से वो जो डैश उनका लाजवाब रहता है, उसी लाजवाब डैश के लिए वहां से गए। अब डू और डाई रेड आएगी और पंचाला प्राइड को मौका बनेगा कि 2 पॉइंट के साथ वो अपना खाता खोल सकते हैं। क्या सुपर टैकल के साथ वो यहां पर शुरुआत कर पाएंगे इस मुकाबले में? 4-0 है। दिनेश कुमार अभी लेफ्ट टू राइट तेजी के साथ जाना चाहते हैं। विकास कुमार का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंकित सिंह के जाने के बाद यहाँ पर इस खिलाड़ी ने स्टेप अप किया है और लगातार अपनी टीम के लिए टैकल पॉइंट दिला रहे हैं। अमीश राठी, Panchala pride. Yeah, very nicely done. Generally a right cover, so he could do that right corner job as well. Sorry. जी बिल्कुल, अमीश राठी और नवीन बिल्कुल आप आराम से वहां पर पानी पी सकते हैं, गागल कर सकते हैं, क्योंकि इस मुकाबले में आपको शाउट आउट करना ही पड़ेगा। जिस तरह से चोला वीरन्स का डिफेंस यहाँ पर चल रहा है, आज शायद वो सोच कर आया था कि अटैक करने के लिए हम जाएंगे चैलेंजर राउंड में, वो न जरूर मिला है। Yeah, I'll tell you something. I was about to mention this. Yes, a very good combination tackle. But I'll tell you, as Tamil Vanan comes in, you as a defensive unit need to understand if you have a third raid. As a raider, you'll have to understand, yes, the defense position is to just go for the tackle always. But sometimes, just play a little smart. Play a little smart. See, because Panchala Pride was struggling, Dinesh Kumar went in for a do-or-die raid and a super tackle situation. Now, why did Gautam go for that dash so heroically? He could have just stood there, as Prince Kumar is just trying to run the clock down. He could have stood there, sent back the raider either with a bonus or just go back with an empty hand. Dinesh would have had 4 defenders. So he would have had much more time, and there was no super tackle position. So as a defensive unit also, you need to think. And that's why we speak about coordination so much, isn't it? जी बिल्कुल, आपने सही कहा नवीन। ये वो थोड़ी सी बिल्कुल सोच के बारे में आपने बात की कि बतौर खिलाड़ी आपको कितना सोचना होता है, बट यहाँ पर अमीश राठी का लगातार ये दूसरा सुपर टैकल। एक बार फिर से यहाँ पर दोनों थाइस पर गए और दोनों थाइस पर जाकर एक और बार शिकार बनाया। फिर से सेम रेडर, और मुझे तो लगा वो एक्शन रिप्ले, वही रिप्ले कहीं दूसरी बार लगातार तो नहीं चल गया। Yeah, no, that's what I was trying to mention. Where Amish Rathi, he's so good, and 2 super tackles, and that's how Panchala Pride has come back into this match. And Chola Veerans, even with them, we've seen this always. Like the Kaziranga Rhinos, they play well in the first quarter of the first half, and then suddenly they go missing, and they go off track. So that is what you do not want to watch, isn't it? That is what you do not want to have an impact on. When you start well, why don't you continue it? See, now Tamil Vanan comes back with an empty raid. He had 4 defenders to pick up a point. He could have gone in. And Panchala Pride, as Mandeep Katkar Saab wants to speak immediately something. जो ठडो देगा मार पटको फला गया जो मैं इतना अगला सर पर चढ़ गया फिर भी नहीं आ सकता था, मुंह तो गया था कुत्ता भी पास जाएगा मार। Yeah, Parminder Bura. Yeah, that's a nice one. Yes, because if you are the top raider of your team, go ahead and take it. Jay Kumar. All right.
He says the defense should shine well. He's also indicated who will go for the first, second, and the third raid. As Parminder Bura comes in with a do-or-die raid strategy on, he still not got a point and will also not get a point. Strong block coming in from Praveen Kumar from right corner, and Parminder Bura will have to go back and sit behind Mandeep Katkar to listen to a few more words. जी प्रवीण कुमार वहां पर मौजूद थे और प्रवीण कुमार ने जिस तरह से वहां पर वो टैकल किया और नवीन क्योंकि देखिए दोनों ही टीम में जो राइट कॉर्नर वो 20 नंबर जर्सी है इसलिए मैं तो एक बार तो कंफ्यूज हो गया था कहीं वो रोहित राठी नहीं फिर मैं देखा कि चलिए टीम वो पंचाला प्राइड की बट यहाँ पर एक अच्छा कॉम्बिनेशन टैकल वहां पर फिर से किया पहले सोलोली शुरुआत की थी और कितना खूबसूरत वो टैकल नजर आया अब रंजीत आज रंजीत का यहाँ पर इंक्लूजन हुआ है टीम में और नवीन क्योंकि आप पिछले मुकाबले में कमेंट्री कर रहे थे यहाँ पर गलती की है तीसरा सुपर टैकल लगातार अमीश करना चाहते थे बट रंजीत ज्यादा अंदर गए ही नहीं Jersey number 56 out. Yeah, Amish Rathi just feeling over enthusiastic. What was he going for? He was going for the right leg from his right hand. No, he should have gone for the left leg instead of the right. Yeah, that is the mistake. So somewhere Dinesh can breathe a little easier. And Dinesh wanted to just go back with an empty raid. And remember, Panchala Pride haven't got too much to do in the raiding department. They've come back into this game only via 2 super tackles. And now Dinesh has to try in this raid because the next raid, they will wait for the do-or-die raid. That's a nice one. Very big error in the context of the game by Vikas Kumar. He shouldn't have done that. Yeah, Mandeep Katkar will not like it. Why did he go for that advanced tackle? He could have just stood back. जी बिल्कुल इसकी यहाँ आवश्यकता थी नहीं और प्रॉपर वहाँ पर सही समय पर दिनेश ने वहाँ से वो चकाया डिफेंडर को और बता दें कि यहाँ पर नवीन आज एक एक्स्ट्रा रेडर के साथ यहाँ पर खेल रहा है एक डिफेंडर जरूर वहाँ पर कम है राइट कॉर्नर पर जो आपको अक्सर अंकित दिखते हैं वो जरूर बाहर है बट यहाँ पर बाहर एक और बार रेडर हो जाएंगे यानी कि पहली मर्तबा चोला वीरंस पंचाला प्राइड को ऑल आउट कर देगा और जो हम बात कर रहे थे रेडर्स की रवि साकेत राहुल कुमार परमिंदर बुरा और रोहित राठी ये कुछ बड़े नाम आज आपको रेडिंग डिपार्टमेंट में दिख रहे हैं उसके बावजूद रेडिंग कमजोर लग रही है Yeah, again, Rohit Rathi, yes, he's a raider. And you'll have to understand, even Palani Tuskers got that issue in the proper right corner. But luckily for Palani Tuskers, there was Prabhakaran, the regular right corner who came in as Jay Kumar will come in now. 6 point lead number. Number point தேவல. என்ன தேவல? பாயிண்ட் தேவல. அப்படியே ஆடினரு. நீ ரெண்டு பேர் தான் ஆடணும். அவனான பாரு. லைன் ஆடினருங்க. தேவல மட்டும் பாத்துங்க. புரியுதா? டிஃபென்ஸ் வந்து டிஃபென்ஸ் ஏரியா வந்து மிஸ் பண்ண கூடாது. பாயிண்ட் யார் தேவ? பிரவீன். அவன் தேவ. Right. He is like a proper school teacher. Pallikudam Adiyar, that's what we call a school teacher. Okay. He actually came in, he said, किसको point चाहिए? उनको. Who needs the point? Them, not us. We don't need the point. So, what should the raider do? They should just go in and probably play on the back line. What should they do? Play on the back line. That's all. That's very, very clearly put across. Let's see if Dinesh can emulate the same thing. जैसे मैं एक्सप्रेशंस के साथ समझने का प्रयास कर रहा था वैसे ही गौरव दैया सिर्फ वहां पर पानी की बोतल का इंतजार कर रहे थे Yeah, and that is why he wanted extra attention of Gaurav Daya. Yeah, it's nice. See, he wants the game to be slowed down. That is nice. It's a good thinking. Why? Because they are leading by 6 points. That's very good strategy. Yeah, see, I was telling about Rohit Rathi. He is managing the right corner, and luckily for them, there is no Arjun Rathi. So Arjun Rathi is only the right raider, left raider for the Chola Veerans, isn't it? Arjun Rathi, proper left raider. That lazy elegance is not there. So that's okay for Panchala Pride to have a very makeshift right corner. Now Parminder Bura there on that right corner. There. Tamil Vannan notices the right flank is weak. He's got bonus +1 there. जी बिल्कुल राइट इन के नीचे सबसे पहले बोनस चुराया राहुल कहीं कोई उन्होंने वहां पर एंकल होल्ड देखिए एक हाथ से नहीं होता है क्योंकि एक हाथ से उन्होंने परमिंदर बुरा के चेन को पकड़ा हुआ था सिर्फ वो लेफ्ट हैंड से ऐसा चाहते थे कि अगर रेडर आए हैं बोनस चुरा रहे हैं तो कुछ और मैं उन्हें गिफ्ट दे देता हूं पॉइंट का बिल्कुल उसी तरह से थे बट अब रोहित राठी को पावर हाउस की तरह एक बार फिर से वहां पर आए और वेरी स्पेशल प्रदर्शन अपनी टीम के लिए लगातार दे रहे हैं Chola Veerans. Yeah, the captain leading from the front on the defensive lines. Left cover, Vanjinadan goes in low on the block.
It's not a dash. He did not want the raider to be dashed out. He wanted the block. He was very clear in his mind, and he put out that block very suddenly for the raider to be taken by a big surprise. See, Ranjit also a right raider, Tamil Vannan right raider, and you do not have Dinesh right raider. So that's okay for Panchala Pride to not have a regular right corner. And they're managing it with Rohit Rathi, sometimes with Parminder Bura, sometimes. But in the previous game, Palmi Tuskers also did not have a proper right corner. But you had Ankit Rana, the big left raider who can come in and demolish that right flank completely. And that is why you got Prabhakaran on that side. You came in with Prabhakaran as a right corner. Now right corner. 2 point. That right flank Panchala Pride. makes an Jersey error number and the 20 left and cover 9 out. Vanjinathan goes off. Praveen Kumar and Vanjinathan, both of them. Great. जी वो प्रवीण कुमार की वो ढंग से ग्रिप बनी ही नहीं थी, क्योंकि शायद वो ऐसा लगा था कि जब वो डिफेंस करने जा रहे थे हल्की सी आंखें भी वहां पर झपक गई थी। और नवीन, जिस तरह से हम क्रिकेट में बात करते हैं कि आंखें जमाना बहुत ज़रूरी होता है बॉल पर, उतना ही आंखें जमाना डिफेंडर के लिए रेडर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वो जो ब्लाइंड स्पॉट शायद एक बार क्रिएट हो गया था, जिसके बाद रेडर बड़ी आसानी के साथ वहां से निकले। वंजीनाथन को भी उन्होंने टच किया। 2 पॉइंट के साथ पंचाला प्राइड आगे बढ़ रही है। परविंदर बुरा ने आज एक भी पॉइंट अभी तक प्राप्त किया नहीं है। राहुल कुमार ने एक रेड में पॉइंट प्राप्त किया है। रवि साकेत को 2 अंक मिले हैं और 4 अंक मिले हैं अमीश राठी को, यानी कि डिफेंस ने अभी काम करना शुरू किया ही नहीं है। Yeah, that is why I'm telling you, Dinesh Kumar becomes a very important raider. He is the only left raider in Chola Veerans. And he has to go in. Oh, that looked like a hasty tackle. But Gautam, I think with his third tackle point, he went in with one hand again. Chola Veerans. And then the support came in at the right time. That's why the tackle was successful. और नवीन, आज लग रहा है कि एक बार फिर से जो बेस्ट डिफेंडर की हम बात कर रहे थे उसमें एक बड़ा उथल पुथल आने वाला है। सबसे पहले कृष्ण नागर वहां पर टॉप पे गए, उसके बाद आशीष सहदेव मलिक गए, अब गौतम भी बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रंजीत यहां पर, रंजीत एक राइट लेफ्ट रेडर है, माफ कीजिएगा, राइट कॉर्नर पर अंदर जाकर क्या बोनस चुराने का प्रयास करेंगे। राहुल कुमार शायद अब वो एंकल होल्ड के लिए प्रॉपर वहां पर बैठकर खड़े थे, क्या बोथ साइड रेड लगा सकते हैं रंजीत इस बार, क्या शिकार बनाएंगे? No, he was trying to raid from the left, Arshit. He's a naturally right raider. See, that's what happens when you don't practice those skills. There, Ranjit is a natural right raider, and he's actually wanting to raid from the left because you very clearly know his footwork, and the way he was trying for the bonus, you very clearly know that he's a right raider. Because there is no right corner, he wanted to go for it, and the pressure of do or die raid as well. That's why he was gone. Gaurav Daya. Oh, second attempt. I thought he had a bigger grip, but Panchala no. Pride. Jersey number 25 out. जी, गौरव दहिया ने वहां पर शुरू जरूर देखिए इस प्रकार से किया था, सिंगल थाई पर जाना चाहते थे, बट रोहित राठी ने बहुत अच्छी तरह से वहां पर काम किया। नवीन, Yeah, the second attempt, I felt he wanted more points there, Rohit Rathi, and that's why he went back and he fell in the lap of Gaurav Daya. And Gaurav Daya, yeah, he did not make the kid sleep on the lap. He just pushed him away. Right, now, weak right corner. Once again, Dinesh is a proper left raider, and that is why he's getting points. That is why he's getting points. Raider out. Yeah, Jay 1 Kumar is point. happy. Panchala Pride. Oh, they want a review. They want a review. It was very close. No kick. Prince Kumar comes in. देखिए from outside the lobby. जी हाँ, वो हाथ जरूर आया दिनेश कुमार का, बट बिल्कुल ऐसा लगा कि जब वो लॉबी से पूरी तरह से बाहर चले गए थे या फिर कहीं कोई लेग में संपर्क था, शायद कोच यही चाहते हैं कि रिव्यू के लिए जो इशारा था वो कोच की तरफ से था। TV umpire. Chola Veerans challenge is raider save 2 point. Our decision raider out, reaching for inside. Please review. Very, very clear that occasion. He mentioned it right. He was reaching from outside. That's why the raider out decision was given. There. That's very clear. He was reaching from outside. That is what it happened. Very clearly mentioned by the referee. And yeah, it was from the coach, so that's okay. It's just 6 minutes left in the first half, so why not take a chance? So it looked mighty close. It looked mighty close, but has to be said, Prince Kumar from that left cover, he went in so strong
and also got the support on that occasion. और साथ ही साथ नवीन उन्होंने अपने आप को अच्छी तरह से सेव किया, एंटी क्रॉस होने से भी बचे, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा वो क्लोज वहाँ पर व्हाइट लाइन की तरफ चले गए थे। बट बिल्कुल यहाँ से यही नज़र आ रहा है कि फिर से वो जो एम्पायर्स का जो निर्णय था वो बिल्कुल सही रहा है और बिल्कुल सटीक रहा है। बहुत अच्छा निर्णय वहाँ पर अमर वर्मा सर ने दिया और साथ ही साथ ये भी बताया कि वहाँ पर रीचिंग फ्रॉम आउटसाइड। Yeah, Mr. Amar, yeah, he does well. Review unsuccessful. Review. 1 point each. Successful, yes. Oh, Number oh. 18. We didn't notice this. Header out. Chola Right. Veerans. Over. No more. Correct. Right, that's a very good decision. It was each 1 point. Who went outside? How come we didn't notice this? Oh, there. It was Prince Kumar. Prince Kumar going outside. Okay, now Rohit Rathi once again. Double job for him today. And I think Panchala Pride, they're lacking a few players. They're not around. Probably they'll join in a later stage, because you also only have Ashutosh Kumar. You've got only one substitute. So Panchala Pride is kind of taking it a little low. ये बिल्कुल, और जो उनकी बैकबोन है ना अंकित सिंह, वही वहाँ पर मिस हो रहे हैं। निशांत जो कि कवर के खिलाड़ी हैं वो वहाँ पर मिस कर रहे हैं और ज़रूर शायद वो लेटर हाफ ऑफ द चैलेंजर राउंड वो ज़रूर सभी खिलाड़ी वहाँ पर ज्वाइन करेंगे। बट यहाँ पर ज़रूर पंचाला प्राइड वो थोड़ा सा राइट कॉर्नर एक ऐसा जगह रहा है जहाँ पर ज़रूर पंचाला प्राइड स्ट्रगल कर रहा है। कवर्स पर तो अच्छी तरह से यहाँ पर जिम्मेदारी प्रिंस और अमीश ने उठाई है, पर विकास का फॉर्म भी वो वैसा कॉम्बिनेशन बना नहीं है जिस तरह से वो हमेशा अंकित के साथ बनाते थे। विकास अब उस तरह से नजर आ नहीं रहे, वो इतने डेडली कॉर्नर दिख नहीं रहे नवीन। Yeah, very much. And also, see, we were speaking about there's a little bit of a time here as Ravi Saket will probably put in an empty raid. That's what it looks like. He's not trying hard. He's not going in deep. He's just showing his footwork on the back line. Yeah, as I said, it's going to be a ball. It's going to be an empty raid. Yeah, you spoke about football for that 90 minutes of game, getting a little too dragging sometimes, getting a little too much sometimes. But that's been the habit of all the football lovers. And apart from the leagues, it's always FIFA World Cup that gets the maximum eyeballs. Maximum people watch that. It's been the strategy from a very, very long time, keeping it for 90 minutes. And now Rohit Rathi in a do-or-die raid, strong double ankle hold, 4th tackle point I think for Gautam. He's done well. 1 point. और ये शायद सोच कर आए हैं कि वो जो बेस्ट डिफेंडर की लिस्ट में है एक बार फिर से टॉप करना है। किक लगाने का प्रयास किया तो रोहित राठी, अभी तक इनका प्रदर्शन अच्छा रहा था, बट जैसे ही वो किक लगी, जो हम आई हैंड कोऑर्डिनेशन की क्रिकेट के अलावा साथ साथ कबड्डी में भी बात करते हैं, वहां पर उस तरह से उन्होंने आई हैंड कोऑर्डिनेशन दर्शाया। अब रंजीत होंगे, अब रंजीत यहाँ पर एक बड़ी डू और डाई रेड में आपको दिख रहे थे, क्या वहां पर क्रॉस नहीं कर पाए लॉबी को, और बिल्कुल अभी एक अंक पंचाला प्राइड को होगा। और नवीन, हम जो बात कर रहे थे वहां पर फीफा की और वर्ल्ड कप की, क्योंकि देखिए क्रिकेट में भी अगर हम देखें, चाहे कितना भी T20 का जमाना आ जाए ना, पर वो टेस्ट चैंपियनशिप को भी वहां पर हम बहुत एंजॉय करते हैं। शायद यहाँ पर रंजीत ने पहले लॉबी में भी पैर रख दिया था, क्योंकि बड़ा जल्दी आएगा वो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, बड़ा जल्दी आने वाला है। No, that is why test matches and exactly on that test championship where India was there in the finals against New Zealand. For the first time that was introduced as once again Gautam gets his high five. That's the 4th 1 point. tackle Chola point, Veerans. or is it the 4th, or is it the 5th? No, it's just the 4th. It's just the 4th tackle point for him. Great. जी बिल्कुल, और वंजी नाथन के वहां पर 4 टैकल पॉइंट्स और साथ ही साथ यहाँ पर चोला वीरेंस के एम गौतम भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। Yeah, just going back to that test match, test championship, which was introduced by ICC, and it was only to revive the multi-day format red ball cricket. It was really important to see the leaderboard, and that's the same thing now with ODI games. I'll tell you something: 50-over games. There is that Super League that goes on, ODI format, where the Super League points have been taken into consideration, and that decides your position in the World Cup. So Cricket World Cup 2023, yes, this year, rather next year, almost this year is coming to a closure. Yeah, so 2023, I'm thinking ahead. So 2023 is happening in India. India hosting that World Cup. India currently in, I think 7th or 6th place currently
because of the ODIs that they be playing. So a total of 16 to 18 ODIs that will be calculated, and depending on where you stand, your pools will be decided. So it's very important that ICC has brought in those point systems. And yeah, that sort of point system also exists in basketball. I'll tell you something. Oh, that's fabulous. And it's really well done once again. Rahul Kumar. 1 point. So again, Panchala a Pride. Raider converted defender putting in that double ankle hold. जी बहुत अच्छी तरीके के साथ वहां पर इनिशिएट किया इस टैकल को, और राहुल जानते थे कि वहां पर रेडर काफी समय से इधर से उधर काफी डिस्टेंस उन्होंने कवर किया था, तो उसके बाद जानते थे एक बार फिर से सीधा दौड़कर वो आने वाले हैं। टर्न अच्छी है, टर्न अच्छे लेते हैं वहां पर रोहित राठी, अच्छी तरह से उनके पास एस्केप रूट बनाते हैं, बट इन्होंने भी यहाँ पर डिस्टेंस काफी कवर कर रहे हैं। उथल पुथल मचाने का प्रयास है, और 4 के हाउस में कभी भी आसान नहीं होता है इस तरह से पॉइंट लाना। क्या ये गौतम का हाई फाई है? Oh yes, oh yes, that is the high five for Gautam. Dash is so strong from Gautam. 1 point. Panchala Chola Pride, Veerans. they want a review, but no. Oh yes, they will go for that. Rohit Rathi wanted that review. Dash comes in from outside the lobby, oh yeah, it looks like as if he's been dashed out. Somewhere Rohit Rathi is confident. What is Mr. Varma saying? Panchala Pride challenge is Raider save 2 point. Our decision, Raider out. Please review. Right. So now only Rohit Rathi's left leg hurts it. Only that can save him. This is a proper nice angle from the camera which is on top of the rack. There. Watch his right leg. He's fallen on his chest. So if the right leg is there for Rohit Rathi inside the lobby, and then he is trying to cross the midline, that should be the only aspect that is saving him, or else no, that is not a review that they want to take. So that gives us a little time. रोहित राठी ने अच्छी तरह से अपने राइट लेग को लगातार लॉबी में रखा था, और मुझे लगा नहीं कि एक बार भी हवा में क्या गया था, बट शायद जरूर टीवी एम्पायर्स ने अच्छी तरह से देखा और बताया कि रिव्यू उनका अनसक्सेसफुल हो जाएगा। चोला वीरंस के पक्ष में 1 पॉइंट, और ये चौथा पॉइंट शायद गौतम के लिए आज टैकल में। Yeah, goes in strong with the dash, and also a solo dash. He does not even go with the support. Goes in solo, does it well. Dinesh Kumar, who's there on that right corner? You need to attack that right corner, Dinesh. You are the only left raider. You need to crack that open. That's an open invitation to get points. There is no proper right corner there still. जी अमीश राठी वहां पर मौजूद है। That's why I think Amish Rathi. Correct. No, that's nice. See, Amish Rathi at least is a defender compared to Rohit Rathi, isn't it? So nice that Dinesh came back. That's the first half. Done and dusted. 19 for the Chola Veerans. They lead, but Panchala Pride will hold that key because they had won the toss, and they will raid first in the second half. Let's take a short little break and come back soon for that. सो मैच नंबर 85 में एक बार पुनः आप सभी का करते हैं स्वागत, और जिस खिलाड़ी ने आज अपनी टीम के लिए
खतरनाक डिफेंस दर्शाया है वो है मंजीनाथन। देखिए 5 टैकल्स उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं, 4 में उन्हें सक्सेस मिली है और 4 टैकल पॉइंट्स उन्होंने अपनी टीम के लिए यहाँ पर प्राप्त किए। जो स्टार्टिंग लीड थी ना नवीन, उन्हें बिल्कुल यहाँ पर क्रेडिट देना होगा जिस तरह से उन्होंने डिफेंस दर्शाया, चाहे वो रोहित राठी हो चाहे वो परविंदर बुरा हो। इसी वजह से सिर्फ 4 रेड पॉइंट्स मिले हैं पंचाला प्राइड को और दोनों ही टीम्स के डिफेंस यहाँ पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। स्वागत करते हैं नवीन आपको कमेंट्री बॉक्स में। Thank you, Harpreet, as Jay Kumar gives in a little bit of a pep talk, much needed, the way they have played to keep up this lead. Yeah, the first trade in the second half will happen from Panchala Pride because they had won the toss, and they will be happy because only 5 men left on court. They want to make sure the raiding is controlled by them. Right, so talking about FIFA finals happening, I think finally Lionel Messi will probably go down happy in his career. There we go, comes in with a strong ankle hold. Gautam makes sure that he gets the high five first. He spoke about Vanjinathan, but the top defender of Chola Veerans is getting his high five. See, that is what it is. That's it. See what? When did the match start? Match started at what? 8:30? Yeah. I think 90 minutes of game. So you still have 30 more minutes to go, and you already know the winner. See, that is what I don't like. In our Kabaddi, it's not like that. And somewhere, you know, it's even that 40th minute, you don't know what's going to happen, and that is why I feel, you know, Kabaddi should be played by more countries. It's a very interesting game. बिल्कुल नवीन, 100% सही बात आपने कही है और सबसे बड़ी बात कि हर 30 सेकेंड्स में एक्शन आना तय है। जिस तरह से रेडर यहाँ पर वो हर 30 सेकेंड के बाद अगर आप बात करें तो वहाँ पर रेड लगाते हैं, यानी कि तुरंत वहाँ पर रेड में बदलाव होता है और हर जगह वो एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट आपको देखने को मिलता है, वो मोर थ्रिल होता है, मोर मजा वहाँ पर होता है। अब देखिए दिनेश, ज़्यादा से ज़्यादा अगर एम्प्टी रेड्स होगी भी तो भी वो तीसरी रेड तो आपको डू और डाई रेड करनी ही है। ये इस खेल को एक विश्वसनीय खेल बनाता है और बिल्कुल आपने सही कहा है नवीन कि किस तरह से ज़्यादा ये खेल बाकी कंट्रीज में खेला जाएगा उतना ही मज़ा और बढ़ जाएगा इस खेल का। Yeah, absolutely. And I'm not taking any credit away from football. Let me tell you this. I'm a big fan of any sort of sport, and yes, football is one among them. And I can even go back to 2014, if I'm not wrong, where Lionel Messi actually was very disappointed in losing that World Cup. He was there in the finals. He lost the World Cup there, as we spoke about the do or die raid. And it is a team perspective. If a team gets 2 empty raids consecutively, the third raid eventually becomes a do or die raid where there has to be a point being scored by the raider, or else he has to go down fighting like this. Strong ankle hold from Vikas Kumar on that left corner. 1 point, Panchala Pride. So in 2014, where Lionel Messi was unhappy, and after that, yes, he won 2 Copa America titles. That's okay. Copa America, yeah, that also is counted as a very big league. But on the other hand, winning the FIFA World Cup, now that's huge, that's big. And this raid is very big from Parminder Bura in the context of the game. Let us say 1 जो point, मंजीनाथन इस Panchala बार बहुत Pride. ज्यादा Jersey number 9 अग्रसर out. होकर वहां पर आगे आ गए थे। देखिए लेफ्ट कॉर्नर से बहुत तेजी के साथ वो आए और पूरी तरह से उनका इतना तेज मोमेंटम था कि वो जो टर्न थी परमिंदर बुरा को, उसको वो टेक नहीं कर पाए, उसे वो कवर अप नहीं कर पाए और परमिंदर बुरा बड़ी आसानी के साथ, वो कहते हैं कि लक फैक्टर बहुत काम करता है कबड्डी में भी, वो सही समय पर टर्न हुए। हालांकि उन्हें कोई अंदेशा नहीं था कि इतनी तेजी के साथ आ रहे हैं, पर रेड में पॉइंट लाए तो डिफेंस में गवा दिया है। दिनेश कुमार को एक आसान सा पॉइंट मिला। जर्सी नंबर 2 out. Yeah, again watch where he is targeting. Right corner, Parminder Bura. That was as if Akshar Patel trying to hit a 6. That's what it looked like. He can hit sixes. You can he? Do you believe in it? अक्षर पटेल। Yeah. नवीन, आई होप कि आप वो मुकाबला वहां पर भूल रहे हैं जब उन्होंने अंतिम ओवर में शायद 18-19 रन के आसपास चाहिए थे, वो 3 छक्के लगाकर इंडिया को मुकाबला जिताया था और शायद वो वेस्ट इंडीज के विरुद्ध मुकाबला था। Yeah, that is what. So that's what I always say. Yes, he can. But the only thing is, yes, Parminder Bura also
can be a proper defender if the consistency is there. Now, that is where we are lacking. That's the reason where Indian bowling is suffering in the death overs. See what happened in the ODI with Bangladesh as well. See, that is where death bowling and death batting. When the Yuvraj Singhs and Suresh Rainas and MS Dhonis have gone, the shoes are still not being filled properly. And now we are watching Virat Kohli's and Rohit Sharma leave the space in the T20 format as well. So that's a big vacuum has been created. Yes, if you don't Bonus point, perform, you will be Panchala made to point. go out. That's very good. But we need to have the vacuum filled, and to fill the vacuum is Yuva Kabaddi series. That is where our force comes in, because there is no vacuum at all now in the Indian Kabaddi lineup, and there is no vacuum at all in the Jaipur franchisee, which just won the franchisee tournament, isn't it? So you always find new stars, you always find new people taking the pride ahead, taking the victory march ahead. That is what I am indicating at. So we need to have, yeah, there is a proper setup. I'm not saying no, but what Yuva Kabaddi series has done, that is phenomenal. Bonus और इस point, बार जरूर डैश Panchala किया गया है। pride. अब Red वो out. गौतम 1 और point. उनकी पूरी टीम Chola शायद Veerans. चाहती नहीं है कि वो अब इस मार्च जो उन्होंने छेड़ दिया है, जो मार्च के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसे कम करें। ये देखिए Great. गौतम एक बार फिर से, और ये बड़े मल्टी डायमेंशनल प्लेयर है नवीन, जिस तरह से यहाँ पर और अगर मैं मल्टी डायमेंशनल की बात कर रहा हूँ तो मैं वो 3D प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसके बारे में हम बात करेंगे। बट तमिल वनन अब रेड पर आए हैं, डू और डाई रेड है। वो अंबती राइडू की मुझे याद दिला देते हैं जब मैं 3D प्लेयर की बात करता हूँ। That is a big talent that we are unfortunate not to watch him play in the India colours. Tamil Vannan, yeah, as expected. He's not got the escape route. He's just brute force. He kicked the defender right, but again a super tackle. Panchala pride. Again Panchala Pride trying to come back with 2 points in a super tackle. And that's it. Whatever, yeah, Akshar Patel's heroics, yes, you mentioned, but he, for me, is always a very good bowler. He is a very strong left-arm spinner. But tell me, you mentioned about West Indies, how far away that was? I think minimum 6 to 8 months from now, मिनिमम isn't it? नवीन वो जो मंथ्स आपने कहे थे वो मैं सुन नहीं पाया। No, 6 to 8 months. 6 to 8 months from now, isn't it? It was 8 months ago, or 6 months ago. या शायद इतने ही आसपास वहाँ पर चल Yeah, रही थी। yeah. So after 6 to 8 months, how much cricket has Indian cricket team played? There was Akshar Patel there. He's played in the match. He's there in the team. He's not. That is what I'm trying to say. Where consistency is the key, and that's why Panchala Pride are lacking that sting today of inflicting the Chola Veerans with a lot of venom. The right corner is missing. When you miss out on right corners, Parminder Pura cannot go in with such Panchala tackle. pride. That is the biggest issue. Right. Anyways, now what is Mandeep Katkar trying to say? सुनो रवि बेटे 2 नंबर पे खेलना है और ब्लॉक पर पूरी ट्राई नहीं है, ब्लॉक ना तोड़ दूंगा आपको पीछे इतने पैर चला दे जिसका कोई अंदाजा नहीं, कट थोड़े आओगा फिर हाथ मारना बेटी, और अगला तो बस ट्रेनिंग मारनी है, ठीक है ना, ट्रेनिंग मारनी बेटे, मारा गाओ, ठीक है, टूटेगा 2 नंबर पे, ठीक है, और ऐड तम भाई कैच करने खतरा ऐड दे जाना चाहिए बेटे, पॉइंट है। चल रवि बेटे शाबाश। I चलिए वो could hear a lot of फुटवॉक के बारे में praises. बताया गया है। फुटवॉक के बारे में कहा गया है कि फुटवॉक आपको ऐसे चलाने हैं जैसे वो कैची जो चलती है उसी तरह से आपको तेजी के साथ जाना है, और फिर शायद या तो वो गौरव दहिया के लिए कहा गया था कि वो टूटेंगे, या फिर कहा गया है कि वो जो गौतम या फिर आपको जो राइट कॉर्नर नजर आते हैं वो कहीं ना कहीं आपको अटैक करने जरूर आएंगे। I like the word cut from Mr. Katkar. Ravi Saket now will have to go back empty-handed. Yeah, so just coming back to football, yes. So when you have the result in your hand with 30 minutes to go, yeah, you may find a 16 last minute goal, a last minute assist, a last minute shocker sometimes, but that's very rare. I think only 3 out of 10 times that happens. So other 70% of the matches, you know the result
in the 20-25 minutes of game still left. So that makes जी it very. नहीं, अभी शायद नवीन हाफ Yeah. टाइम बचा है अभी, ये Oh, भी is हाफ it? टाइम का समय हुआ है जी बिल्कुल। My God, and we are already rooting for Argentina. So that itself is a damper, isn't it? That itself is a spoiler of a game. So why do we like, or rather, why do we like this Control your sort team. of Only one. format, kabaddi or cricket in T20 or ODI? Is because you don't know what's happening next, and anything and everything can happen like this. Ravi Saket has shown why kabaddi is the king of surprises. It's a big raid, and even with a subdued voice, I will go out and shout saying it's a 4-point raid. Panchala Pride are right back into this game. Gautam, Gaurav, Daya, Praveen Kumar, Dinesh Kumar, everybody needs to go back on the bench. That's a huge error. First 20. They know it, they're disappointed. और नवीन इस रेड को शायद हमें कटकट रेड कहना ही पड़ेगा। जिस तरह से Yeah. यहाँ पर बात की जा रही थी, मनदीप खटकर साहब ने बताया था कि कैसे आपको फुट मूवमेंट दर्शाना है, और ये पंचाला प्राइड की वापसी का शंखनाद है। ये पिपूरी नहीं बजी है, ये शंखनाद किया गया है। क्या लाजवाब रेड थी, एक बार फिर से हम रिप्ले में जरूर इसे देखेंगे। देखिए जो तेज फुटवर्क कहा गया था, यहाँ गौतम से बचे, उसके बाद मुझे क्या लग रहा है कि क्या 4 पॉइंट तो बिल्कुल है। Yeah. पांचवे का कहीं Yeah. कंटेंशन था नवीन? Come on, stop being so much greedy, Harshit. मुझे ऐसा लगा कि क्या चौथे खिलाड़ी का शिकार बना है, बट नहीं। विकास कुमार यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर पर मौजूद है। डू और डाई रेड है। क्या सिर्फ एक बोनस अटेम्प्ट पर यहाँ पर गए थे? कॉन्फिडेंस था, पर बड़ा रिस्की Yeah, था very नवीन। much. Yeah, very much. And also the reaction. The reaction from Vikas Kumar suggested that the bonus was taken away. As Inyavan comes in. Yeah, they wanted a defender there. With a super tackle situation, Inyavan is a proper right corner defender. Now Rohit Rathi. He should not get greedy. He should not get tackled out in a super tackle, because Panchala Pride, remember, have come back into this game only via super tackles. He should not give that option to Chola Veerans. I was mentioning about this. It's a wrong move by Rohit Rathi. It's two strong defenders. Anyone will not leave you. You can kick him. You can keep on kicking him. And now, you cannot say that is scissoring. You cannot say that is scissoring. Come on. When the raider can kick the defender so much onto the chest, how can we call this scissoring? In the previous game, that's what happened. Defender can kick the raider can kick the defender like a football, and there is there's no respite. Watch how many times the raider kicks the defender here, and this is what I always feel. Even in cricket, as a bowler, I feel it's so much batter-oriented rules, and even in kabaddi, so much raider-oriented rules. Why? Just watch how many times Rohit Rathi kicks him. Now watch this. 1 point. Come on. 1, 2, 3, 4. Yes, scissoring. Come on, Harshit. I just cannot believe this. Even in the last match that happened. And I'll tell you something. Scissoring is near the neck. It's near the neck, not near the legs. How can you choke a raider by scissoring near the legs? जी बिल्कुल नवीन, ये आपने बिल्कुल सही बात जरूर कही है, पर देखना होगा कि हमारे फिर से एक बार टीवी रेफरीज इसे अच्छी तरह से देखेंगे, पूरी तरह से देखेंगे, क्योंकि जो वहां पर ऑन रेफरी थे उनका तो यही निर्णय गया है सीजरिंग का। Chola Veerans challenge is raider out, super tackle. Our decision, raider save, scissoring, dangerous play, raider save. Please review. No, come on. Even in the last match they did this. And I'm not here to argue or contest what the on-court referees or the TV umpires tell us. I'm just saying, to keep the broadcast very clean, that when a raider can kick you so much, 1, 2, 3, 4, now there you lock him. That's called locking. That's not scissoring at all. Where is he scissoring him? Is it near the neck? No, that is brutal tackle, because you may choke the raider. The rule of scissoring is near the neck. Repeat, please. Now, how can we apply it to the legs? Is it brutal? Is it life-threatening to call it scissoring? They will actually go for scissoring. Yeah, I know this. 1 point. Panchala Pride. Jersey number 9. चलिए, वैसे आपका जो कहना था नवीन, वो बिल्कुल आप सही तरीके से पुट ऑन किया कि क्योंकि वो सीजरिंग बड़ी लेट थी,
ये देखिए यहाँ एक बार फिर से उस रिप्ले को देखते हैं कि रोहित राठी ने कहा, थोड़ा सा उन्होंने डिफेंडर पर जरूर वो किक करने का प्रयास किया था और लगातार किए है, यहाँ पर 3-4 किक्स वहाँ पर लगातार की है। तो इस नियम पर एक बार फिर से और थोड़ा सच ऑन करना मैं भी चाहूंगा। बट ये देखिए जब तक वो डिफेंस हो चुका था मुझे लगा नहीं वो सिजरिंग का इतना ज्यादा अटेम्प्ट वहां पर था और उतना इम्पैक्ट था उसका कि वो रेडर को रोक पाए। Yeah, see, first of all, right now Mohandas is making man. That's really good. He saved the Chola Veerans from the all-out. Beautiful bit of it. And Mandeep Katkar is not happy. Bonus plus 1. Beautiful. Chola Veerans. 16 Nice. out. Targeting the 14. left in Chola Veerans. position there. एक बार फिर से Now, दो खिलाड़ी चोला वीरेंस के। Super tackle. See, correct. No, I'll ask you something. In the beginning of the franchisee leagues when we started in 2014, this rule of once the tackle is on, in the super tackle, the whistle used to go off. Then they changed it for the raider to struggle, just to make sure it creates more excitement. Now all out. 2 plus 2, 4 points. Okay, just to make sure, to create more excitement, the raider was given the time until the struggle is on Leave the court. in a super tackle. Ball in. So when the struggle is on, you can give time to the raider. Where is the advantage for the defender? या वो बिल्कुल नवीन आपका सही कहना है कि वो रेडर्स ओरिएंटेड और वो बैटर्स ओरिएंटेड ये गेम बिल्कुल वो थोड़ा सा निष्पक्षता जो आप देखना चाहते हैं गेम में। Yeah, see in cricket it's okay, somewhere I'm not too happy with that because all the rules are all batter oriented rules. Because in cricket, see what happens, you want to see more boundaries, more sixers, more runs being scored instead of low scoring encounters. But this is Kabaddi, come on. Let us say 1 point. And Dinesh Chola Kumar, Veerans. I hope he's not hurt his finger. He's safe in that raid. Our physio partners UEM will come on. Offside time out. See, so much goes in for a raider's body and a defender's body. Oh, I think the defender stamped on the legs unknowingly. Prince Kumar actually stamped on the hands unknowingly. Oh, he's struggling, Dinesh. Thankfully, our physio partner UEM is there. नवीन वो जो टैटू में क्या लिखा हुआ है तमिल में वो शायद आप क्या पढ़ सकते हैं? Oh, where? 4 नंबर On his जरूर legs? या वो 4 नंबर जरूर लिखा था उसके नीचे कुछ लिखा था। बट चलिए अभी यहाँ पर कितनी Okay. इन्हें इंजरी है ये देखते हैं, थोड़ा सा जरूर वापस आए हैं। और वो जो सिर्फ डिफेंडर वो अननोइंगली जैसा कि आपने बताया वो चढ़ गए थे, अब Yeah, सब्स्टिट्यूशन किया जाएगा। Yeah, now the coaches will really put in their brains, much needed, and we will need to put our brains together to see which is scissoring and which is not. See, as far as I know, as we've been discussing with Mr. Great Kabaddi Rao, Prasad Rao sir, that's what we call தம்பி ஒன்றும் இல்லைடா ஒரு பாயிண்ட் லீட் வந்து கவர் ஈக்குவல் ஆச்சு ஏய் இங்கே ஆடுங்க It's equal now because of that decision. That ring finger of Dinesh. அவசரப்படாதீங்க Still shivering, it's still அது shivering. அந்த Yes. வசப்பட அந்த கதை பத்தி Go back, have எடுக்கணும் some magic spray on. வெளியே போகிறேன் Dinesh, get a magic spray that will numb the muscles out. டிஃபென்ஸ் தப்பு பண்ணக்கூடாதா அவன் பண்ணட்டும் மேடம் Yeah, so I was speaking about Prasad Rao. ஏய் ரைட்ல He was very evidently telling us and explaining all the rules. If a defender ஏய் அப்படி puts அனுபவம் his leg across the neck of the raider, see that is life threatening. That is choking. And that is scissoring. Yes, I completely agree with that. There's no taking back of that rule at all. And I am for that rule. Now tell me, how can you choke a raider by locking his legs? This happened even in the previous match. तो इस नियम के बारे में आपने बहुत सही तरीके से बताया क्योंकि मैं भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा परिचित था नहीं और आई होप कि बहुत सारे दर्शक भी इसके बारे में खुलकर वहाँ पर जानते नहीं है। तो क्या सिर्फ वो नेक पर माना जाता है या फिर वो आप पूरे शरीर पर मानते हैं? बट यहाँ जो डैश आया है उससे परमेंद्र को पूरी तरह से बाहर जाना होगा। या अरे पूरे शरीर पर ही मान के चलो अब तक ठीक है, लेकिन is that a brutal tackle? I'm asking a simple question to anybody making the rule. As we made that lobby rule very clear, right? We need to make that clear. You see, where are you giving a green card to a defender if it's a brutal tackle? Where are you avoiding the point to the raiding team if it's a brutal tackle?
if it's a life-threatening tackle, because it is a contact sport, yes, we have got set of rules that has to be followed. Yes, we will all follow it because we need to enjoy the game and we will enjoy it with the rules. We are abiding by the rules. I'm hands down, I'm accepting it. But answer me one thing, where is that life-threatening? Now, locking a raider who's kicking the defender 4 times, now as a defender I will complain, saying my chest is paining. Give me points. Give me 2 points on super tackle. If that was a 2 super tackle for Chola Veerans, they will be now on 30. Isn't it? Exactly. See, you can penalize me if I'm talking if I'm talking no sense. No, you can penalize me for that. But when I'm asking something, it's according to the law of humanity that you're kicking a defender 4 to 5 times on the chest. Now, is that not brutal? बिल्कुल नवीन, ये बहुत अच्छी तरह से आपने पुट आउट किया और वी आर होपिंग कि बिल्कुल इसे अच्छी तरह से सुना भी जा रहा है और जो भी इसका वो जो कंक्लूजन है, यानी कि हम जिस तरह से वार्तालाप यहाँ पर की गई है, क्योंकि बहुत सारी वार्तालाप हमने वो लॉबी के नियम के बारे में बात की गई थी, उसे कबड्डी फेटर्निटी ने माना और तुरंत वहाँ पर कहा कि रेडर जैसे ही अगर लॉबी में चला जाता है तो डिफेंडर उसके बाद आउट करार दिया जाएगा नहीं, वो रेड वहीं पर समाप्त मान ली जाएगी। तो जरूर इस नियम के बारे में भी, क्योंकि रेडर अगर आपको किक करके, अगर आप ही के फोर्स को वो बाइक किक यूज करके आपको छुड़ाना चाहता है तो वो कहीं ना कहीं आपका ज्यादा उपयोग कर रहा है। No, that is even okay, Archit. See, when the raider is kicking the defender and going away, that's backtracking skills, that's kicking skills, that's okay. But in a super tackle, I am only asking this rule to be looked in for by all the stakeholders. Dinesh Kumar will go down for that surprise tackle from the right in a do-or-die raid. So, we will come back to this match very, very soon. My only request to all the stakeholders and lawmakers of Kabaddi is just watch out for that scissoring. If it is on the leg, it is not life-threatening. It is some sort of a leeway for the defender. As Ravi Saket comes in for a do-or-die raid, this match is hanging in balance with 1 point. And neck-to-neck competition is on. Gaurav Daya shouldn't have done that. Why did Gaurav Daya go to become a hero? जी, और क्या बात है, क्या काम यहाँ पर रवि साकेत अपनी टीम के लिए कर रहे हैं। नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है, एक एक पॉइंट का महत्व हम सभी यहाँ से जानते हैं, बट रवि साकेत इस युवा खिलाड़ी ने देखिए जो 9 अंक यहाँ पर आज अपनी टीम के लिए प्राप्त किए हैं, यही थोड़ा सा मैच डिसाइडर बन रहे हैं। बट क्या बात है, एक और बार मोहनदास पहले अपनी टीम को रिवाइवल दिलाया था लगातार और अब यहाँ पर ब्यूटीफुल स्विफ्ट टो टच के साथ राहुल को बाहर किया है। Mandeep Katkar does not want to see it. And even we are feeling the pressure of this match as well. What a swift toe touch and low down. The defenders cannot do anything. And again, no right corner, Arshit. No right corner. Parminder Bura was standing there. So, somewhere, that is what is coming back to bite the Panchala pride. And Chola Veerans now should not blink their eye in the defense. They'll have to understand. And remember who's standing there in the left corner. Tamil Vannan. So somewhere everything is going on, but again Parminder Bura on the right corner. This has to be Mohan Das's time. He has to turn it around. He has to make sure that he goes for the... Oh! That's been crossed. That's a super raid. That's a big mistake. Yeah, Mandeep Katkar Saab. I can understand your frustration. 2 points. बार वहां पर वो एंकल होल्ड किया था, उसके बाद अमीश राठी शायद महज एक ही खिलाड़ी वहां पर डैश के लिए गए थे। देखिए थोड़ा सा आगे से, क्योंकि वो समय उन्होंने दिया नहीं था और मोहनदास एक लंबे रेडर हैं, वॉक लाइन के आसपास से वहां पर विकास ने एंकल होल्ड करने का प्रयास किया, अमीश ने जाकर डैश करना चाहते थे बट उससे पहले लगभग मोहनदास मिड लाइन को क्रॉस करने के समीकरण में पहुंच चले थे। Let's listen this now. if try करने का इसकी 6 में ट्राई करनी चाहिए बेटे भई देखदा है नहीं वाला ला रहा कच्चा नु करे जाए और किन काम नहीं करना इसी ट्राई करानी थी बोल रहा है। I love it. I like his aggression. I like his intensity. इसे मारना साला ना ना मैंने भी रहा है Nah. I like it. Yes, that's being the boss. That's why Panchala Pride have done so well comparatively to the summer and the monsoon edition. Isn't it? In the winter edition, they have been really good. Why? Because the boss is behaving like a boss.
That's nice. Parminder Pura gets points. Save. 1 point. How many? Panchala Oh, Pride. just Jersey one, number 8 just out. one. और वंजी नाथन के लिए उसके बाद से वो दिन बना नहीं है। पहले हाफ में उन्होंने 4 टैकल पॉइंट्स लिए थे, पर दूसरा हाफ उनके लिए बेहतर गया नहीं है। एम गौतम ने जरूर वहां पर 8 टैकल पॉइंट प्राप्त किए हैं। नवीन जरूर एम गौतम अब वो फायरी स्टार्ट दिखा रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर आगे की तरफ जा रहे हैं। बेस्ट डिफेंडर के तमगे को जरूर शायद उन्होंने भी प्राप्त कर लिया होगा। बट पंचाला प्राइड के लिए आज किन्होंने परफॉर्म किया है। अमीश राठी को दूसरे हाफ में इन्हें भी पॉइंट नहीं मिला है। पहले हाफ में इनके पास भी 5 टैकल पॉइंट थे। तो अमीश और वंजीनाथन पहले हाफ के सुपरस्टार, दूसरे हाफ में थोड़े से खामोश रहे। रवि साकेत ने काम किया है, परमिंदर ने काम किया है, पर रवि साकेत राइट कॉर्नर, एक कमजोर कड़ी लगातार झलक रही है पंचाला प्राइड की। 1 point. Yeah, Chola Veerans. right Jersey in number actually 13 out. wanted to go for the tackle, and then Ravi Saket, he's a raider. There. Confusion, and Mohan Das, who's just coming from the substitution bench, has created wonders for Chola Veerans. Parminder Pura. Whoa, watch out, Mohan Das. Why do you have to do this? I was just appreciating you. I've not even closed my mouth. Save. You 1 commit point. that error. Panchala Pride. Jersey number 16 out. जी, मोहन दास को बाहर जाना पड़ेगा, मोहन दास को बाहर जाना पड़ेगा। देखिए, शायद इनकी पोजीशन पर वो उतना ज्यादा आगे आ गए कि वापस पीछे जा नहीं पाए। कोशिश जरूर की उन्होंने कि चलिए बचा जाए, पर परमेंद्र बुरा अब अंतिम 3 मिनट के खेल में यहाँ पर कुछ कमाल कर रहे हैं। अब तो महज पौने 2 मिनट का समय शेष बचा है। 1 पॉइंट की लीड चोला वीरंस के पास है। क्या संडे इवनिंग मैच यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। रिव्यू के लिए जा रहे हैं। मोहन दास को क्या लगता है कि परमेंद्र ने उन्हें टच नहीं किया है? Panchala Pride. No. He stopped it. पंचाला शायद बोनस चाहता है। Yeah, good review then. Good review. Bonus point. Yeah, bonus +1. TV umpire. Panchala Pride challenge is bonus plus 1 point. Our decision only 1 point, no bonus. Please review. Right, let's watch it. Parminder Pura, where is the attempt? No, he's cutting it. He's cutting the black line. He's cutting the bonus line. I'm so used to say it as a black line. When will that habit, bad habit, go out of me? Yeah, he's cutting that bonus line, so there is no clear bonus, and Panchala Pride will lose their review. Yeah, and also requesting all the lawmakers once again, let's watch that scissoring act again. Please give something for the defenders. It's a raider heavy Review match. unsuccessful. I know. No bonus. Unsuccessful, yes. Only 1 point. It's a raider heavy Panchala sport. Pride. Yes, we want to see a lot of Panchala raid Pride. points, No but more review. I'll tell you, always, the raiders are just battle winners. The defenders are war winners. If we have proper defensive skills, the team always wins. So don't take that small thing away from a defender. At least in a super tackle, yes, you get 2 points if you pin down the raider, but you have 10 other rules. Not to, lock the raider, not to put him across, and when he is locking Rahul in, Kumar. you say it is scissoring. Wow! Lovely! राहुल कुमार, Fabulous! Raider out. देखिए 1 नवीन point. क्या Panchala कॉम्बिनेशन Pride. नजर आया। पहले राहुल वहां पर Raider गए out और for उसके one बाद point. बहुत अच्छा साथी खिलाड़ियों ने निभाए। देखिए राहुल, ये बहुत ज्यादा हैस्टी टैकल हो सकता था, क्योंकि Raider, यहाँ पर लीड 1 पॉइंट की इससे पहले चोला वीरंस के पास थी और 2 अंक बिल्कुल जा सकते थे, बट सही समय पर कॉम्बिनेशन। मैं वो खिलाड़ी को देखना चाहूंगा जिन्होंने यहाँ पर लेग्स पकड़े थे, उनका रोल मैं ज्यादा महत्वपूर्ण मानता Red हूँ। Panchala. Yeah, see, only in that breathtaking defensive skill, your voice was really high. So that's what I'm requesting on behalf of all the defenders, Arshit. जी बिल्कुल नवीन, क्योंकि मैं बात करनी हूँ इस मुकाबले के बाद जरूर। और सबसे पहले मैं खुद समझना चाहूंगा, उस नियम को जरूर स्टडी और बेहतर करना चाहूंगा, और उसके बाद मैं हमेशा आपके साथ हूँ, क्योंकि नवीन मुझे आप पर भरोसा है कि यू आर फैंटास्टिक सॉर्ट ऑफ अ पर्सन जो हमेशा सही के लिए खड़े होना चाहते हैं। Yeah, see, there is a rule. There is a rule called scissoring. I agree. Yes, there is a rule, but only when the raider's neck is caught in between the defender's legs, not when the leg is caught in between the legs. Come on, that's not even brutal. Right. Anyways, 32-32 on the board, and unless and until they are thinking of a tie, I am not sure this match which way it will go by. Parminder Pura has been tackled again because of the defense. Chola Veerans are winning this. It's only the defenders who will keep the Kabaddi sport flying really sky high. Please understand, the defenders need something. Vanjinadan comes in for the block, and then the support from Gaurav Daya. Beautifully done.
And now Fantastically. the Raider should cross the block line. He should just cross the block line. If not, that's nice. Chola Veerans' victory. Raider save. चलिए 10 सेकंड का 1 समय point. शेष है। बोनस प्लस 1 चोला पॉइंट चाहिए विराट, होगा। जर्सी नंबर बोनस प्लस 56 1 आउट। पॉइंट राहुल कुमार को चाहिए होगा। अमीश ने बिल्कुल सही काम किया, क्योंकि अगर पूरे 30 सेकंड लेने देते तो टीम बिल्कुल वहां से हार जाती। कोशिश जरूर की थी डबल थाइस की, बट अब राहुल कुमार क्या कोई चमत्कार कर सकते हैं। एक इजी पॉइंट दे दिया जाएगा। कल वाले क्षण की याद दिला रहा है मुझे नवीन ये, कल वाले समय की जब वो फाइनल में जयपुर वर्सेस पुणे भी थोड़ा ऐसे ही नजर आ रही थी, बट अब ये मुकाबला चोला वीरेंस के पक्ष में चला गया है। डिफेंडर्स वंजी नाथन पहले हाफ में 4 पॉइंट, और अब ये बड़ा पॉइंट उनके लिए मेरे मुताबिक सब कुछ है। मैच चेंजिंग पॉइंट है। Still there is time. Harshit, your FIFA World Cup result might be out, but our Kabaddi result is still not on. 40 minutes are over, Harshit, in the match, and we don't know who's going to win this. It may be a tie. It may be Panchala Pride. It may be Chola Veerans. Dinesh Kumar has not crossed the block line. Go cross the block line. Make the raid legal. If not, there is 1 point. Finally, Chola Veerans. Finally, Sharma has it say. Chola Veerans win this with a nail-biting finish. What a day. What a match we've had, Harshit. ब्रेथ टेकिंग नवीन, बिल्कुल वो सांसें ऊपर नीचे कर देने वाला ये मुकाबला था। और चोला वीरेंस, जय कुमार साहब को अब सांसें आई होगी। अब वो जी में जी आया होगा, जैसे आप हिंदी भाषा में अक्सर कहते हैं। गौरव दैया के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी, और ये अब एक अलग खुशी है। अब ये अलग खुशी, और शायद जय कुमार साहब सबसे पहले जाकर मनदीप खटकर से जाकर हाथ मिलाने वाले हैं, क्योंकि क्या गेम आपको देखने को मिला है। अंतिम सेकंड समाप्त होने के बाद यहाँ पर हमें जाकर पता चला कि चोला वीरेंस इस मुकाबले को 2 पॉइंट से जीत रही है, और इस मुकाबले को डिफेंडर्स ने जिताया है। वंजी नाथन की अगुवाई में एक बार फिर से टीम जीती है। एम गौतम आज फिर से सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर रहे हैं, और वंजी नाथन का सुपर क्लासी प्रदर्शन और मोहन दास के प्रदर्शन को आप बिल्कुल नहीं भूलना चाहेंगे रवीन। Lovely. He came from the substitution bench. He made sure the match was impacted because of his rage. Mandeep Katkar says something to the referee. He says, okay, see you soon in the next match. Right. As Parminder Bura tried his real best. And also, the defense of Chola Veerans. Once again, if you see who has won the war, it is the defenders for Chola Veerans. Yeah, after that super tackle, which was not awarded in their favor, they held their nerves, they forgot about it, as we were still talking about it. But nice to see Chola Veerans forgetting and moving forward. That is the best sportsman spirit, and that is what we always want to do. And Harshit, as I relieve you for the post-match presentation preparation, we're watching these high points as the match was a nail-biting finish. It was as if that this was again a final worthy encounter, as you say that, Harshit, always. Look at that, Chola Veerans, because they have won the war only with the tackle point, and the battle with the Raiders is won by the Panchala Pride. 17 points, 1 point more in the raiding department, but for the defenders, it is the big victory in the war, and that's why Chola Veerans have won this by a couple of points. 16 tackle points there, 4 better than the Panchala Pride. Ravi Saket, yeah, that's the best raider there for them. 60% only, no Super 10 at all. So that means such a low scoring game this was. Ravi Saket, he had to manage the defense as well. And Panchala Pride going in without their regular right corner is Ankit Singh. They were struggling today. But watch out for Chola Veerans' M. Gautam. He is trying to climb back to that leaderboard of the best defenders, back on top. Probably after this tally of 8 points, we'll have to see where he's placed. I'm sure he's climbed up from 3rd to 2nd for sure. And also alongside with him, a very good support by Vanjinathan. Both the covers striking and firing well. So the last 3 matches of today with Taravliaros, Palani Tuskers and Panchala Pride, those 3 were real Paisa Vasool match, and that made everybody watch the game at the edge of their seat. That's what we want to see. Very good day. Day number 1 in the challenger round. So that is what day number 1 after all the matches being played in day 1 of the challenger round. It's Palani Tuskers holding fort on top of the table. Buttal Magnets not far behind. 9 points for them. Humpy Heroes on 7, and then the later half of the table as well. The Kaziranga Rhinos trying to prove their worth and mettle to be here in the challenger round. They will have a chance tomorrow as well. They will play the strong Chola Veerans.
So Kaziranga Rhinos take on the Chola Veerans. I'll have my eyes on that because we want to see Kaziranga Rhinos win. That's a 7 p.m. game. But at 3 p.m. we will have Muttal Magnets taking on the Aravali Arrows. And then we will have the Humpty Heroes at Periyar Panthers at 5. Then the 9 p.m. game, Palani Tuskers and Panchala Pride. Oh, that's a big game as well, coming up at 9 p.m. So thank you so much for everybody watching live and exclusive on Fancode for your time and love. We will slip in a short little break. I am Navin Shori signing off on the day 1 of the Challenger round. See you soon tomorrow at 3 p.m. or day 2 of the Challenger round in the Yuva Kabaddi series. Good night, take care and have a very, very peaceful sleep with the dreamy night. A breathtaking and nail-biting finish of this match challenge round day number 1. Welcome to the post-match presentation of match number 85. We would now like to thank our partners, associate partners, Swaraj Tractors, broadcast partner, Fancode, fantasy partner, Dream 11, physio partner, UEM. In the presentation today, we have Sahil Pawar, associate sports interactive. A huge welcome in the post-match presentation, Chola Veerans और पंचाला प्राइड. क्या अद्भुत मुकाबला यहाँ पर आपको देखने को मिला है इन दोनों टीमों के मध्य. चोला वीरंस इस मुकाबले को जीता और अंतिम सेकंड्स में जाकर जीता 35-33. यहां पर एक नेल बाइटिंग मुकाबला आपको बिल्कुल देखने को मिला है. सीधा चलना चाहेंगे अवार्ड्स की तरफ. अवार्ड्स की शुरुआत करते हैं विद द बेस्ट रीडर रहे द यंग गन पंचाला प्राइड के रवि साकेत, जिन्होंने स्कोर किया आज 9 पॉइंट्स. देखते हैं आइए. He is back with his throne. बात कर रहे हैं बेस्ट डिफेंडर की. चोला वीरंस के एम गौतम ज्यादा समय तक आप इन्हें बेस्ट डिफेंडर के पद से दूर रख नहीं सकते. 8 टैकल पॉइंट्स और दमदार टैकल अब आपके सामने स्क्रीन पर. और एक समय पे स्कोर था 32-32 पर. उसके बाद एक बार फिर से दर्शाया कप्तान ने कि क्यों वो अपनी टीम को फ्रॉम द फ्रंट लीड करते हैं. बात करें कमाल मूवमेंट की. कबड्डी कमाल अवार्ड जाएगा चोला वीरंस के वंजी नाथन को, जिन्होंने लगाए थे मूव ऑफ द मैच. आइए देखते हैं.
और वो वंजीनाथन का ब्लॉक नहीं था, वो जीत का पॉइंट था. That's all from the post match presentation of match number 85. Thank you so much for joining us. चेक 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 कर लो माइक. चेक 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 चेक. मेरा नाम वांजीनाथन, मैं चोला वीरंस टीम से खेल रहा हूँ. मेरा नाम वांजीनाथन, मैं चोला वीरंस टीम के लिए खेल रहा हूँ. ठीक है, अब ये आपको हाथ ऊपर करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ही करता हूँ. हाँ ठीक है ठीक है. तो चलिए, अभी हमारे साथ मौजूद है द वेरी स्पेशल स्किपर ऑफ चोला वीरंस वंजीनाथन. वंजीनाथन, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, आपको हिंदी समझ आता है? आते हैं सर. चलिए, तो अब मैं प्रश्न आपसे पूछता हूं कि आज के मुकाबले में जहां स्कोर बराबरी पर था 32-32, परमेंद्र बुरा रेड करने आए और आपने वो टैकल किया, क्या थोड़ा सा रिस्क था या फिर क्या आप सोच के साथ उस टैकल को करने गए? தமிழ் में बात करेंगे சார். பாயிண்ட் ஈக்குவலாக இருந்துச்சு. அப்போ வந்து ரைட் ரைடு வந்து லெஃப்ட் சைடு விளாண்டான். அப்போ வந்து நான் யோசிக்கவே இல்லை, அதுவும் நல்லா உள்ளே விளாண்டான். அதனால் நான் உடனே அடிச்சிட்டேன் அந்த டைமில். ஓகே சார். चलिए, परफेक्ट एंगल की आपने बात की और परफेक्ट आपने बात की. अब हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे वंजीनाथन कि आप कहाँ से हैं, कब से आप कबड्डी खेल रहे हैं, कौन आपके आइडल और कोच हैं? நான் வந்து பாண்டிச்சேரியில் பாகூர் பக்கத்தில் ஒரு குலிநாத்ன்ற ஒரு சின்ன ஒரு கிராமத்துலேருந்து விளையாடுறேன். எங்கள் ஊரில் சின்ன வயசுலேருந்தே கபடி விளையாடுவேன். நான் சின்ன வயசுலேருந்தே கபடி விளையாடுறேன். எங்கள் ஊரில் கிளப் டீம் நிறையா இருக்குது, ஒரு 3-4 டீம் இருக்குது. நான் ஃபஸ்ட்டில் விளையாட ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து தென்றல்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு கிளப் டீம்லேருந்து தான்
சீனியர்லாம் விளையாடுவாங்க, அவங்கள பார்த்து தான் நான் கபடி விளாண்டேன். அதுக்கப்புறம் நான் சப் ஜூனியர் நேஷனல்ஸ் போனேன். அதை வச்சு நான் சாயில் ஜாயின் பண்ணேன். சாயில் ஜாயின் பண்ணது முத்துகிருஷ்ணன் சார் தான் எங்கள் கோச்சு. முத்துகிருஷ்ணன் சார் தான் இப்போ இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கேன்னா அது முத்துகிருஷ்ணன் சார் தான் ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லுவேன். அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் வந்து எம்இஜி கபடி டீமில் இருக்கேன். எம்இஜியில் வந்து இப்போ எனக்கு கோச் வந்து பார்த்திபன் சார் இருக்காங்க. அவங்க தான் இப்போ இருக்கிறது காரணம், அவங்க தான் சொல்லுவேன். चलिए, थैंक यू सो मच मंजीनाथन, हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आशा करेंगे कि आप ऐसे बेहतरीन स्कीपर के तौर पर उभरते रहें।